Assalamu alaikum. Welcome from Future Concern Grammar School. I hope everyone is enjoying good health. Today we will learn about the human heart. What is heart? How it circulates blood throughout the body and what is the structure of the human heart. The heart is an important organ of the human body. Humans have known about the heart since the ancient times. पुराने ज़माने में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने हार्ट को स्टडी किया और डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए. Among them, Aristotle thought that the heart is the organ responsible for creating blood. प्लेटो को लगता था कि हार्ट वो सोर्स है जो कि ब्लड को सप्लाई करता है. Hippocrates noted blood circulating cyclically from the body through heart to the lungs. Erasistratos noted the heart as a pump. He also named the tricuspid valve. इसी तरह several discoveries के बाद हमारे पास हार्ट का मॉडर्न स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ. हार्ट का फर्स्ट ट्रांसप्लांट 1967 में केप टाउन में एक साउथ अफ्रीकन सर्जन क्रिश्चियन बार्नेट ने किया था. Initially, the survival rates was very low. Louis Washkansky was the first recipient who got a donated heart, but he died 18 days after the surgery. Later, several discoveries were made and the innovations led to the increase in the survival rate. Students, ह्यूमन हार्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को टिश्यूज़ तक सप्लाई करता है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव भी करता है. According to Henry Gray's book, heart is roughly the size of a large fist which weighs between 10 to 12 ounces, 280 to 340 grams in men and 8 to 10 ounces, 230 to 280 grams in women. Average heart beats about 100,000 times, pumping 2,000 gallons of blood through the human body. हार्ट लंग्स के दरमियान चेस्ट के मिडल में प्रेजेंट है जो कि आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ब्लड को सप्लाई करता है. एंड दिस सिस्टम इज़ नोन एज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन डिटेल. हार्ट इज़ enclosed in a double walled sac called pericardium जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और इसे चेस्ट के दरमियान अपनी जगह पे रहने के लिए सपोर्ट भी देता है. The heart consists of the four chambers, which includes right atrium, left atrium, right ventricle, and left ventricle. The heart also consists of the four valves, which includes tricuspid valve, mitral valve or bicuspid valve, aortic valve, and pulmonic valve. The upper two chambers of the heart are called right atrium and left atrium. And then there comes the two lower chambers called the right ventricle and the left ventricle. Superior vena cava and inferior vena cava carry the oxygenated blood to the right atrium of the heart. Blood flows from the right atrium to the right ventricle through the open tricuspid valve. जब वेंट्रिकल्स ब्लड से भर जाते हैं तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है और ब्लड पल्मोनरी वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स को लीव कर जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है ताकि ब्लड ऑक्सीजनेट हो सके. The pulmonary veins carry the oxygenated blood to the left atrium. Blood flows from the right atrium to the left ventricle through open mitral valve. When the ventricles are full, the mitral valve shuts. Blood aortic valve के थ्रू ventricles को लीव करता है और aorta में एंटर होने के बाद पूरी बॉडी में सप्लाई होता है. And that's how the heart functions continuously. Oxygenated blood वो ब्लड होता है जो कि लंग्स के थ्रू हार्ट में आता है और फिर उसने पूरी बॉडी में सप्लाई होना होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, while the deoxygenated blood has dark rusty red color.
और ये वो ब्लड होता है जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने के बाद वापस हार्ट में ऑक्सीजनेशन के लिए आता है। Students, let's see some facts about the human heart. Human heart is roughly the size of a fist. एक आम इंसान का दिल एक बंद मुट्ठी के साइज के बराबर होता है। The human heart beats about 100,000 times per day, जो कि 3 बिलियन हार्ट बीट्स बनते हैं एक एवरेज लाइफ स्पैन में। An adult heart beats 60 to 80 times per minute, जबकि बच्चे की हार्ट बीट एडल्ट्स की हार्ट बीट की निस्बत तेज़ होती है। इट रेंजेस बिटवीन 70 to 190 हार्ट बीट्स पर मिनट। ह्यूमन हार्ट पम्प्स 5.7 liters of blood. The heart is located in the center of the chest, pointing slightly left. That was all about the human heart. I hope you have understood everything. फ्यूचर कंसर्न ग्रामर स्कूल ने FC स्कूल सरगोदा के नाम से एक YouTube चैनल का आगाज़ किया है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पर जाएं और जाकर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।